Assalamu alaikum kids, and a very warm welcome in our today's video. This will be the last lecture of our chapter number 3 from chemistry book. The topic that we are going to discuss in this lecture is electronic configuration based on Bohr's model given on page number 52 and 53 of your book. So at the end of this video you'll be able to discuss the electronic configuration of atom and state the number of electrons division in each shell. So what about the electrons in the shells? We all know that the electrons revolve around the nucleus in the area called the electron cloud, and these electrons occupy some energy levels जो कि उनकी boundary होती है कि इसी के अंदर रह के ये rotate कर सकते हैं, which is not beyond that energy level, ताकि वो atom का ही part बने रहे और atom से बाहर ना निकल जाए, and not that much कि वो इतना करीब आ जाए nucleus के कि वो nucleus के अंदर गिर जाए. So they have to maintain a certain orbit. So इसको कहते हैं एनर्जी लेवल. जितना ज्यादा एनर्जी लेवल दूर होगा न्यूक्लियस से उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन्स को ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर सकें. सो फॉर दैट डेफिनेटली देयर आर 3 बेसिक लेवल्स ऑफ एन एटम. द फर्स्ट लेवल कैन होल्ड अप टू 2 electrons, second level can hold up to 8 electrons, and the third level can hold up to 18 electrons given the division of the orbitals. Orbitals आगे की बात है, ठीक है. बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ इज कि हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं और उस लेवल के हिसाब से उनके अंदर डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं कि वो इतने इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है अपने अंदर. ऑब्वियसली गिवन कि कितना ज़्यादा डायमीटर है. डेफिनेटली अगर कोई न्यूक्लियस के करीब वाला शेल है या न्यूक्लियस के करीब वाला इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है तो उसका डायमीटर छोटा होगा एज कम्पेयर टू द फार्दर वन जिसका डायमीटर बड़ा होगा. So now when we talk about the electron shells, तो हमें ये पता है कि electrons can jump from one shell to another when we discuss about the Bohr's atomic model. लेकिन हम यहाँ पे ये बात discuss इतना ज़्यादा depth में नहीं करेंगे because that is not related to the syllabus. Although we need to understand and memorize कि कितने shells अपने अंदर कितने electrons hold कर सकते हैं. So either we can name it through numbers, that is first energy level, second and then third and then so on. Or we can also name these shells by alphabets. Starting from the very first shell, that is the energy level 1, is represented as K shell, following with the L shell, that is for second energy level, M for third, N for fourth, and so on. So that was all about the electronic configuration. Hope you understood and hope you enjoyed the video. Thank you so much. See you in the next video for the next chapter inshallah. Allah Hafiz.